Good afternoon, students. Welcome to this class of values and ethics. I am Professor Navaneeta Rath. I teach sociology at Utkal University. Today we are going to start with the third subunit of the module that has been prescribed for this semester and on the women, institutions and practices. In this regard, our sub-theme today for discussion is women, community and society. As we know, as the individual child grows, his or her needs go on expanding. And when the needs go on expanding, they have to come out of the boundaries of their family and they start interacting with the larger community, and from community they make a move towards the larger society. Here their connections with other people increases, their circle increases and their interaction also expands. In this connection, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ତାର ବନ୍ଧୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପରିବେଶ ଏବଂ ସେ ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହୁଏ ସେ ତାର ଚାକିରି କରେ, ବଜାର ଘାଟ ଯାଏ, ତେଣୁ ଏହିପରି ତାର ପରିବାରର ପରିସୀମା ଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ହୁଏ ଏବଂ ତାର ପରିସୀମା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। When the child leaves the family, we find that the outer community with which he or she interacts is not the same as family, because in family, as you know, we have all blood, we are related with each other by blood relationship, and parents and blood relations take a lot of care, provide a very comfortable atmosphere to the child to grow and develop within the boundaries of the family. Therefore, the child finds very secure, very comfortable within the family. ପରିବାରର ପରିବେଶରେ ଶିଶୁଟିଏ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରେ ଆଉ ତାକୁ ଲାଗେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପୂରଣ କରନ୍ତି, but when he surpasses the boundary of the family, he comes to the larger society, he goes to the school, he has to interact with the teachers, he mixes with his friends. से जेतेबेले परिवार छाड़ी दिए से स्कूल को आसे विद्यालय रे शिक्षकों संगे से सेतेबेले तार इंटरैक्शन करे, तार जो सांगसाथी माने थांती तांको मेଳରେ से तार बंधुत्व स्थापन करे, and after that and during that period he attends different festivals that is being organized in his community or in his locality. तार अंचल बा ता ग्राम रे जते विभिन्न टाइप रो कल्चरल फेस्टिवल हुए से मध्य से अंशग्रहण करिथाय एवं से मध्य बजार जाए, घाट जाए एवं से बहुत जगह से खेल पड़िया जाए, तेणु that he starts interacting with the community. Then from community he goes to the larger society. But I want to tell you, my dear friends, the child doesn't feel that secure when he goes from this space to this space and from this space to this space, because he's during this period what happens, his interaction, his exposure no doubt increases, his interaction also expands. But our question is that how secure the child is in the larger community and the larger society. बहुत समय आम पेपर पढ़ी न्यूज पेपर बा गणमाध्यम आसे शिशु अधिकार क्षुण्ण होइछि बा child's rights are being violated in the community and in the society. And when we talk about the violation of child rights, it is both the boys and girls whose rights are many times actually violated. But in large measures we will see
that the girl becomes more vulnerable than the boy. गोटे झीटीए निजक अधिक असुरक्षित मन करे गोटे पुओ पिला तुलन कहीं एपरी हुए से गुड़िक आम आलोचना करवा इन दिस डिस्कशन सब्सिक्वेंट डिस्कशंस वी विल ब्रिंग इनटू आवर डिस्कशन दैट what are the practices that we practice in the community. Is the community a gender neutral place, on whether the society is gender neutral or it is gender in character. तेणु यही परिस्थिति में कहवाई चाहे जदि आम देखा a community comprises of both men and women. उभय पुरुष एवं नारी को लेकिरी गोटे गोष्ठी गठित होता है. Both are members of the society, both interact in the society, both contribute immensely for the society, both work in the society, and we cannot say that the community is only meant for men or only meant for women. So both should complement, both should cooperate. Unless and until both cooperate, we cannot constitute a community or a larger society. Their equal participation in the affairs of the community and the society is a vital need. जदि नारीटीए community बा society को आसबनी तार अवदान दब नाही तेबे community केबे हब नाही. Similarly, the boy also needs to interact in the community. The boy needs to participate in the community affairs or the societal affairs, and the boy also needs to contribute for the society. And therefore, जदि से उभय एका भाया प्रतिदान बा अवदान रही सोसाइटी प्रति तेणु से बोथ शुड रीप द बेनिफिट्स ऑफ द कम्युनिटी एंड सोसाइटी. बोथ शुड फील दैट सोसाइटी और कम्युनिटी इज an equal space for both of them, where both have got equal chance or equal opportunity to the resources. जो कम्युनिटी जो रही रिसोर्स ताको संबल ता उपरे उभय से संबल सृष्टि करिबारे गोटे भूमिका ग्रहण करिथांदी. तेणु से जो संबल रही संबल उपरे उभयंकर अधिकार रही. एंड बोथ द कम्युनिटी एंड सोसाइटी शुड बी रिस्क फ्री फॉर बोथ द मेन and the women. Moreover, they should interact with others and move within these spaces, and they should have their own dignity. तांकर निश्चय डिग्निटी रहिबा मर्यादा रहिबा कथा कम्युनिटी एवं सोसाइटी रे जदि कारण सेटा होची पब्लिक स्पेस एंड दे आर नॉट प्राइवेट स्पेस लाइक द फैमिली where their dignity should be safeguarded. तांको आमे उभय को उपयुक्त मर्यादा दबा कथा. किंतु एठी प्रश्न उठे आमे गोटे नारी एवं गोटे पुरुष को कम्युनिटी बा सोसाइटी समाज रे समान मर्यादा देई थाउ कि. माय आंसर इज दैट many women no doubt enjoy dignity in society, but there are a major chunk of women who still are deprived of this dignity in the society, and they do not enjoy their rights equally with their male counterparts, even with some of their female counterparts in the society. बहुत समय रे नारी रो केवल मर्यादा क्षुण्ण हुए नहीं आमे तार अधिकार ताकू समान अधिकार दबारु वंचित करि थाउ. Why do we practice like that? How do we violate the human rights of women? And if we see the community culture बहुत समय रे अनेक कम्युनिटी रे नारी मानकु सब बेले गोटे सेकेंडरी स्टेटस दिया जाए. We accord a secondary status or degraded status to the women, and the community or the society, the mindset is such that the practice is such that they look down upon the women and they give a higher status to the men, and they think the men are the drivers, real drivers of the society. And but their safety, dignity and rights of the women are often violated in the community and society. केवल परिवार रे हमें पढ़ी थिले. We had studied in the family how many times women's rights are being violated, but we had not come to the community and society. So we will be discussing that how the mindset, the same mindset that actually
pervades in the society, which gives a secondary status to the women. It doesn't give equal resource to the women as we give to men. We always give more importance to the men in comparison to the women. We always think that men's rights should be protected, and we never bother about women's rights, and therefore women often also encounter risks in the society. The society and community becomes risk areas for the women many times. आमे सबु बेले पेपर रे पढ़ुवा पिला माने जे देखो प्रत्येक दिन आमे नारी रो अधिकार रो वंचित होइचंती। नारी रो आमे जो मर्यादा दबा कथा मर्यादा देइने। बहुत समय रे गोटिए नारी किपरि शोषण रो शिकार हेइची, गोटिए नारी किपरि गणधर्षण रो माने शिकार हेइची, एगुडी को आमे प्रत्येक दिन न्यूज पेपर बा आमर गणमाध्यम रे आमे पढ़ी थाउ। आमे देखू गोटे नारी अधिकरू अधिक उभय पुरुष नारी मु कहू नहीं केवल नारी उभय पुरुष नारी बोथ मेन एंड वुमेन एनकाउंटर वायलेंस इन सोसाइटी। बट इफ यू लुक एट द रेट तुम्हें तार हिसाब कर तार जदि तुम्हें हिसाब नब गणना अनुसार देखिबो वुमेन issues more add on our media pages। नारी मानक उपरे अधिक चर्चा होता है किपरि तांकर अधिकार क्षुण्ण होची, तांका मर्यादा किपरि क्षुण्ण होची, माने पब्लिक बा सर्वसाधारण स्थान रे सेगुड़िक आमे देखि थाउ। एंड पर्टिकुलरली तुम्हें देखि थिबो बहुत समय रे तुम्हें बसी थिबो अनेक लोक खूब हीनमन्यता भाव हीनमन्य भाव गुड़िए माने भाषा प्रयोग करती। दे यूज सच लैंग्वेज which is not actually palatable to the women, which affects the dignity of the women, and they are denied their rights over property। तुम्हें तुम निज घर कथा भाव घरटीए आमे जदि पचारू ए घरटी कहार बहुत कम समय रे गोटे स्त्री लोकर नार घर बोली आमे कहि थाउ। आमे को एटा अमुक लोकर घर, आमे जमीटीए कहार पचारले आमे को एटा अमुक लोकर जमी, ताहले नारी रो कोन प्रॉपर्टी बा संपत्ति उपरे कौनसी अधिकार नहीं ना। समाज एवं गोष्ठी जोटा आमे कहूचे से माने ही नारी को ए जो अधिकार रु वंचित करिसंती। दैट लेट अस थिंक तुमे माने यू आर वेरी रिजनेबल स्टूडेंट्स, यू आर इन अ मैच्योर्ड स्टेज। Please think over it that when the property is being created by both and women, men and women, why should it be in the name of a single person? It may be in the name of both the persons। दी जन को नारे रो दी जन होचंती संपत्ति को जदि जदि सृष्टि करचंती both men and गोटे एग्रीकल्चरल फील्ड आमे जिबा गाँ को देखिबा जे उभय पुरुष ओ नारी ए जो क्षेत्र रे मान तांकर चाष जमी रे काम करथांती, किंतु आमे कहू एटा होची पुरुषर जमी। आमे बहुत समय रे अवार्ड जेतबेले देखू पट्ट पेंटिंग हो ये हो आमे देखिबा पट्ट पेंटिंग रे उभय रही थांती पुरुष एवं नारी ताकू करि थांती, किंतु जेतबेले अवार्ड टे हुए आमे कहू एई होचंती चित्रकर आउ से जो चित्रकर रो जो स्त्री झियो जो माने काम करथांती तांकर गोष्ठी रो जो माने काम करथांती तांकर ना आसे नाही, तेणु अवार्ड टी सबु बेले पुरस्कार पाती पुरुष। तेणु दिस इज अ माइंडसेट एंड वी हार्डली रिकॉग्नाइज the ability, the contributions of women in the community and society। तेणु एगुड़िक द्वारा कौन हुए तांकर जो सोसाइटी से माने नो डाउट दे कंट्रीब्यूट एज अ रेगुलर प्रैक्टिस, बट दे डू नॉट फाइंड इट टू बी वेरी फुलफिलिंग फॉर देम। तांको गोटे परिपूर्ण समाज बोलिया लागेनी, तांको बहुत समय लागे जे तांको शोषण करा जाउची, तांकर अवदान को केही ग्रहण करूनाहंती एवं असुरक्षित मध्य मने करिथांती। आउ सेमानको विषय रे आमे जेतोले खराब भाषाटीए प्रयोग करू, when we use a very bad language against the women, they may not react but that affects them seriously। and आमे एई जो जिंस गुडी को आमे एथिरे डिस्कशन करिया। Particularly we will start with violence against women in public spaces। सर्वसाधारण स्थान रे नारीटीए किपरि हिंसार शिकार हुए तारी उपरे आज आमे आलोचना करिबा। आमे जानिछे प्रत्येक दिन जदि देखिबा नारी ओ हिंसा ए दीटी
अति साधारण जिनस दे आर सपोज एज इफ इट सीम्स दैट दे आर बर्न ट्विन्स जेपरी नारीटीए हेले निश्चय हिंसार शिकार हम हिंसा कहले आमे नारीटी को बुझीबा ना एटा नुहे एटा होची सबु आमे ही आम कृत मनीष कृत दे आर मैन मेड इन कैरेक्टर आउ कम्युनिटी आ सोसाइटी आमे कहूचे सब बेले सुरक्षित हवा कथा गोटे नारी पाए व्हेन वी आर टेलिंग दैट द पेरेंट्स डू नॉट अलाउ the student the children to go on, particularly the girls to go out of the home in the evening, and that is a gender bias we are telling. बहुत समय रे आम पाठशाला भी आमे कहू संध्या पर आमे झील मान को हॉस्टेल बाहर को अलाउ करू नाही किंतु आमे काहे की करू नाही सेठी ए सुरक्षार प्रश्न उठे केते सुरक्षित आमर नारी जेतेबेले से बाहर को बा सर्वसाधारण स्थान को जाए केते माने परिमाण रे वी आर अवेयर वी आर सेंसिटाइज्ड दैट वी हैव टू keep or safeguard the interest and the our women. That is again another cause. आमे जदि आज सेतिकी मात्रा रे निजे सचेतन होई थांतु नारी सुरक्षा आज एक प्रश्नवाची हेई न थांता तेणु आमे देखिबा ए जिनसटी केवल भारत रे नुहे सबु आड़े रही माने नारी माने सबु बेले दुर्बल एवं तांको शोषण सहजरे करा जाई परिवो बोली आमर गोटे मानसिकता रही कारण एई मानसिकता गोटे पैट्रियार्की आमे जोटा कहू पुरुष कैंद्रिक समाज रे एई जिनसटी बहुत बहुत भाव प्रचलन चले जेतेबेले बापाटीए माटी को एई रकम माने बाहर देखे पुरुषटीए नारी की छोट पिला मनरे मध्य से रही जाए छोट बालक टीए भावे मु बालिका ठू निश्चिंत मात्रा रे किछि मात्रा रे सुपीरियर बट दिस इज नॉट एट ऑल अ करेक्ट थिंग आमे भाबिबा आमे दुई जण होछु शिशु आमे दुई जण ही समाज को आसीचु आमे दुई जण ही आमे एका बळे आमे विद्यालय हो किंबा उच्च शिक्षा अनुष्ठान हो किंबा कार्यस्थली हो सबुठी भाबिबा नारी और पुरुष समान उभयंकर एका रकम अंतर्निहित दे हैव इक्वल इंटरनल potentials and we have to tap them and we should not discriminate between them and we will find that public space सर्वसाधारण क्षेत्र रे आमे भाबू नारीटीए सत्य प्रकृत बहुत समय हिंसार माने शिकार होता है पुरुष मानक मध्य हत्या करा होची किंतु जदि नारी मानक हत्यार संख्या देखिबा ताहा अधिक होची एंड देश एहा द्वारा आमे कौन हो गोटे अनइक्वल सोसाइटी जो थे कि इक्वालिटी नहीं माने इनइक्वालिटी आमे कहूँ इज ए रियलिटी इन द सोसाइटी प्रकृत रे नारी पुरुष मध्य आमे समानता आनी पारु नै जेतेबेले आमे तांको हिंसार शिकार करू जना पड़े जे आमे पुरुष प्राधान्य लागे समाजटी एवं पुरुष मानक नारी उपरे जो निर्यातना सेगुड़िक प्रतिफलित होता है आउ एटा केवल मु कहिछि जेपरी एटा केवल भारत रे नुहे कि आम परिवेश नुहे सारा पृथ्वी रे आमे विश्व रे जदि देखिबा नारी हिंसार शिकार हवा हार पुरुषों ठारू यथेष्ट अधिक थाए प्रत्येक तमे आमे जदि देखिबा श्रेणी प्रत्येक श्रेणी रे उच्च वर्ग हो बा नीच वर्ग हो जे कोनोसी बयसर भी मध्य किछि न थाए प्रत्येक बयस रे प्रत्येक आमर जो कहते जातिर जो प्रत्येक जाति रे एवं प्रत्येक आमर जो धर्म रे आमे देखुचे प्रत्येक धर्म रे प्रत्येक संस्कृति रे प्रत्येक देश रे नारीटीए पुरुष ठारू अधिक हिंसार शिकार होता है आमर जो यूएन वुमेन हो आमर जो हिंसार जो आमर थाए माने जनगण गणना थाए सेथिरे देखा जाए नारी हिंसाहार यथेष्ट अधिक ए जेतेबेले आमर चलीथला महामारी कोविड-19 बा कोविड-19 ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक यू वुड हैव seen how domestic violence, how violence was taken as a very big outcome of this pandemic. सेही परी कौनसी गोटे कौनसी स्थान नुहे जहाँ बा कौनसी समय एटा आजिर नुहे यह काले काले रही आसीची किंतु जेतिकी आमे अग्रसर होचे जेतिकी आधुनिकता आमे आधुनिकता को आपणाऊचे आमे नारी को सेतिकी असुरक्षित करि चलीचे आउ आमे देखुचे गोटे नारी
केवल परिवार नुहे तार विद्यालय में आम बहुत समय देखुचे विद्यालय से किपरि शोषणर शिकार होतेबे से गोटे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे व्हेन सी ट्रावेल्स इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सेतेबेले किपरि असुरक्षित होउची जोठी कार्य करुची कार्यस्थली रे से किपरि शोषणर शिकार होउची राजरास्ता रे किपरि बा ऑन स्ट्रीट हाउ सी इज बीइंग ट्रीटेड एंड इन द इंस्टीट्यूशंस वेयर सी वर्क्स आउ तार आम देखुचे प्रत्येक जगार यही गुड़िक तार जो नारी मान विरुद्ध रे जो हिंसा हिंसा किपरि हो चली आम भावुले जे आउ जेतेबेले हमर टेक्नोलोजी हैला पिला माने यू आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एन एरा ऑफ टेक्नोलोजी यू आर वेरी गुड इन टेक्नोलोजी किंतु टेक्नोलोजी द्वारा मध्य किपरि हिंसा बढ़ी चलची ता मध्य तमर नजर बहुत समय थिबो तेणु एहीपरि गोटे नारीर जीवन रे हिंसा प्रत्येक तार स्तर जो लाइफ साइकिल अप्रोच कहूलु से प्रत्येक स्तर रे थाए एवं प्रत्येक स्थान रे थाए दीटा जिनस ता जीवनर प्रत्येक स्तर रे लाइफ साइकिल रे ता जीवन चक्र रे जो जो स्तर दे से गति करे कौनसी स्तर हिंसा मुक्त नुहे किंबा कौनसी स्थान मध्य हिंसा मुक्त नुहे नो स्पेस नो स्टेज इज वायलेंस फ्री फॉर द वुमेन आउ एपरि भी मध्य आमे देखुचे बहुत समाज रे जेतेबेले नारीटीए माने एल्डरली स्टेज रे तार परिपक्व बयस रे मध्य आमे भाबुथिले शिशु माने होउचंती मझिरे भाबिले नाइ adolescent girls but युवती माने young girls they are becoming victims but now we find even the elderly women they are also in large measures they are being affected by violence तांकर बहुत परिमाण रे सेमाने मध्य ए जो हिंसार शिकार होउचंदी परिपक्व बयस रे मध्य हिंसा तांको छाडू नाही तेणु आमे देखुचे जे जो फॉर्म्स ऑफ वायलेंस होउची ताहा विभिन्न प्रकार होउची आउ ए वायलेंस द्वारा ही आमे देखुचे जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ी चलची काहे कि ना जेतेबेले इफ यू लेट अस टेक एन एग्जांपल इफ द पेरेंट्स इन अ रूरल सेटअप दे विल फाइंड दैट इन some of the rural schools that their children, their daughters are being actually sexually malhandled. That gives an apprehension that we won't send our children to school. मु एबेर गोटे कथा कहूची 7 दिन तले जो आमर युक्तराष्ट्र अमेरिकार गोटे स्कूल फायरिंग होता गोटे पिला तार गन टी आनी 3टी पिला मारिदेला 7 दिन जाई कौन सी स्कूल बंद हो नथला किंतु बापा माँ माने डर रे आउ पिला को कहीं स्कूल जीवाई छाड़िले नहीं just see this brings inequality in our society if we are inflicting violence on our girls and we are not allowing our girls to go to school we are not allowing our girls women to work in the workspaces which are not violence free we think that there are safety issues we keep them at home at that time what happens not only there is gender inequality but the society suffers we are not able to tap the productive ability of our women and we cannot have women's empowerment and the national progress is also affected by that जातीय विकास मध्य तार द्वारा अफेक्टेड क्षतिग्रस्त होता है तेणु इट इज अ वेल एस्टाब्लिश्ड फैक्ट दैट वायलेंस अफेक्ट्स वुमेन्स जनरल वेलबींग बोथ फिजिकल एंड मेंटल जेतेबेले गोटे नारी हिंसार शिकारग्रस्त हुए सेतेबेले तार उभय मानसिक और शारीरिक स्तर रे से बहुत भावरे क्षतिग्रस्त हुए एंड दैट लीव्स अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट in her and she fails to unfold her real potential during her lifetime. So we should keep our women violence free and it prevents women in meaningfully participating in the social processes. मु आज कहूची जेतेबेले आमे नारी मानक पाई पंचायत रे लड़ीबार व्यवस्था कले तांका पाइका मध्य we started giving reservations for them and many women came to the forefront of politics. It was a very welcome step by which we were trying to include and we were trying to mainstream our women in the community and society. But
in the long run what happened, many of these women who contested, who won the elections, they became actually vulnerable to violence. ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବାର ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଝିଅ, ତାଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, they were under represented। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାଇଁ କଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟିତ କିପରି ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ପବ୍ଲିକ ସ୍ପେସ୍ରେ ଆଣିବେ, କମ୍ୟୁନିଟି ହେଉ, ସୋସାଇଟି ହେଉ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ହେଉ, ସେ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଉ, ସେ ଆମର ପଲ୍ଲୀ ହେଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ, ସବୁଠି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ more and more women should come up and they should participate equally with the male। କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନସିକତା ଯେତେବେଳେ ଜନମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାଲ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତାକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ସେ ମାନସିକତା ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି, if at all that mindset is within us, that is it a good thing? If it is not a good thing, then how we can change it, and what are the modalities that we can adopt so that we can include more and more girls, both the girls and boys together can make up a healthy institution, a healthy community, a healthy society। ତେଣୁ यार उपरे आमे चिंता करिबा, आउ सेथिपाइका आमे देखिबा जे को टाइप रो माने को व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ violence that the women face in the society, because women face myriad forms of violence। violence ro अनेक गुड़िए फॉर्म थाए, प्रकृति थाए बा आकार थाए। first we will come to eve teasing, then stalking। I will be telling what are the different forms। First is very common form that we find in our daily life. Everyone of us might have also become a victim of eve teasing। Then the second is stalking. Then the third one, I will tell each and every one, I will describe and I will tell how it affects us. Then rape and gang rapes. Then the fourth one is sexual harassment at workplace. Then workplace is also a public space where sexual harassment is becoming is a growing feature। Then the fifth one is witchcraft apprehension murders, माने डाहाणी संदेह करी जो मारी दियंती से न्यूज मध्य आमे देखुचे, एवं मर्डर्स हत्यार न्यूज देखुचे। एसिड थ्रोइंग माने बहुत समय एसिड पकई दियंती ता विषय मध्य तुमे पिला माने जानिथिबो। बॉडी शेमिंग एंड सेक्स ट्रैफिकिंग, these are the very common types of violence and that you might have observed, that you might have experienced, that you might have also realized। किंतु आमे केबे भाबिचे कि आमे ए जो टाइप रो ईव टीजिंग हो कि बा स्टॉकिंग हो किपरि आमको आघात दिए, किपरि एहा नारीर मर्यादा क्षीर्ण करे। मो घरे मो माँ, मो भौणी, मो जेजेमा जदि एहार शिकार होती ताहा किपरि लागिबो, तेणु मु याकु किपरि दूर करिबि ता उपरे मध्य आमे चिंता करिबा। वर्तमान आम इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ वायलेंस वीमेन फेसेस इन पब्लिक स्पेस।